I'm Ridhima Bhatnagar and we're beginning this broadcast with some breaking developments coming in. Amid the row over the movie, The Kerala Story, the Madhya Pradesh Police is now claiming to have unraveled a love jihad module. 15 people belonging to the HUT have been arrested, 10 from Bhopal, 1 from Chindwara and rest from Hyderabad. 5 suspects had allegedly married Hindu girls after getting them converted to Islam. 2 of these men are converts from Hinduism themselves. The Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra has gone on to claim that in the garb of being gym instructors or professors, HUT members were radicalizing people, forcing them to convert and then marry. जो तथ्य सामने आए हैं उनकी गहराई में हम जा रहे हैं। एक चीज साफ है, लव जिहाद धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय, असंतोष फैलाने की कोशिश करना, ये हमने बहुत गंभीरता से लिया है। और मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। हिज़्ब-उत-तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में ये पकड़े गए हैं। जहां तक सवाल 7 लोगों के धर्म परिवर्तन का है, ये अपने आप में पूछताछ में सब चीजें धीरे धीरे निकलती आ रही हैं। और अचंबा आप देखिए, ये ब्रेन वॉश करने वाले जो लोग हैं, ये साधारण लोग नहीं है। एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग चलाता है, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्नीशियन है। इस तरह के लोग ये लव जिहाद जैसे काम में लगे हुए थे। हिंदू बेटियों को ब्रेन वॉश करके, फंसाकर, शादी कर पहले लड़के बने मुस्लिम और फिर लड़कों के द्वारा उन लड़कियों को इस तरह का किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी इनका षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। Let's also now bring in our colleagues. We have Shailendra Vangu joining us on the broadcast. We also have Arunma joining us on the broadcast. Shailendra, coming to you first. दो बड़ी एलिगेशंस आई हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो ये है कि HUT मेंबर्स पे एक लव जिहाद का एलिगेशन है और दूसरा उनका एक कंपैरिजन करा गया है PFI जैसी बैंड आउटफिट्स की तरफ से। तो पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताइए, HUT कैसी आउटफिट है, किस तरह की एक्टिविटीज में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है अभी तक? देखिए, अभी तक जो जिस तरीके से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 10 लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से और 1 छिंदवाड़ा से, इसके अलावा 5 लोग हैदराबाद से पकड़े गए थे। उनसे जो ATS और NIA ने प्रारंभिक पूछताछ की है, उसमें ये पता चला है कि पकड़े गए 16 में से 7 लोग ऐसे हैं जो पहले हिंदू धर्म को अपनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस संगठन से जुड़ने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और ये न केवल अपना धर्म परिवर्तन किया, बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जिन लड़कियों से शादी की, उन लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। ये सबसे अधिक खुलासा जो है वो राजधानी भोपाल के समीपी बैरसिया एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें रहने वाले एक युवक जो सौरभ जिसका नाम था, और वो हैदराबाद में एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसके बारे में ये पता चला कि ये पूरा जो मास्टरमाइंड है, वो इस पूरे मामले को लेकर मास्टरमाइंड बताया गया है। वो सौरभ से पहले सलीम बना और फिर उसके बाद उसने अपनी पत्नी को भी धर्म परिवर्तन कराया। और जिस तरीके से कल जब सौरभ के पिता से जब जानकारी लगी तो उसने बताया कि जाकिर नायक के जो सिर्फ
प्रभावित होकर ये लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार की रडार पर जाकिर नायक और उससे जुड़े लोग भी हैं। जिस तरीके से खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ किया कि MP ATS और NIA की टीम लगातार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मध्य प्रदेश में अंजाम दी गई। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ तौर पर कहा कि इस तरह के जो लव जिहादी हैं या जो पहले लव जिहाद करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, बाद में ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, यानी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में सर उठाने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों भी ये देखने में आया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ युवक जो है वो PFI से जुड़े हुए पाए गए थे। So as Shailendra is pointing out, the allegations that are being made by the state government are that they are not just involved in activities like love jihad, but could be involved in activities related to terror and arms procurement as well. Let's bring in Arunma also in the conversation. Arunma, taking on the angle that is a comparison that is being drawn to banned outfits like the PFI, what are sources within the agencies telling you? What is the kind of literature that is being seized from the accused? So 2-3 important points there. First, there are digital devices which have shown videos, etc., from the suspects, which shows that they are propagating an ideology which is telling people to choose caliphate over the democratic system of polity that is there here in India. Second, why the comparison with Popular Front of India is because there are apparently videos seized again from their mobile phones and digital devices which show that deep inside jungles of Madhya Pradesh there was some kind of arms training that was being given by this group, similar to Popular Front of India's ideology, because PFI also, if you see the Fulbari Sharif module, if you see that investigation says that in that Sabzi Bagh room that had been rented by the PFI Bihar module, that was the plan, that to take them to outskirts of Bihar, outskirts of Patna, to forested areas or areas which are lying vacant, and give them training to use commonly available things like sticks or commonly available rudimentary devices to protect themselves. So that parallel therefore is drawn. Now, what is HUT really? This is an organization which came into existence in the 1950s and has its base in Jerusalem. In India, the only known activity of this group is when the Batla House encounter happened and they had carried out protest back then. Other than that, HUT's name has really not come up. So is this PFI coming up in another garb? Because ultimately what the agencies tell you is that the base cadre of all these organizations is the cadre that was once part of CIMI. From CIMI it became Indian Mujahideen. When Indian Mujahideen was forced to disband, they became Popular Front of India. Now that Popular Front of India is banned, is the cadre, the sleeper cell, now trying to regroup using the HUT ideology? That is what the agencies are probing. It's very likely that the National Investigation Agency could take over this investigation very soon, since already there are Madhya Pradesh and Telangana links. The links could be in other parts of the country as well. Arunma, that's exactly the question that I wanted to understand. There are two aspects here. Considering the fact that you are saying we haven't heard of them as far as any of the active involvement other than the Batla House, is this now the PFI or originally which was a CIMI that seems to have regrouped? That's one. Secondly, how are the agencies planning to crack on the sleeper cell so that the activity of outfits like the HUT can be monitored as well? See, it's a constantly evolving strategy. This entire operation, we are told, was cracked after an input from the Central Intelligence Bureau. It was the Central IB which got in touch with Madhya Pradesh ATS, the anti-terrorism squad there, because most of these 16 people were either originally from Bhopal, Chhindwara, or they were associated with Bhopal. Some had links with Hyderabad as well. And the Telangana wing of the police there, the Madhya Pradesh wing and the Central IB, they worked together and cracked this module. It is being alleged that some of them are actually originally Hindus who converted to Islam, and once they converted to Islam, then they married Hindu girls and either quote-unquote forced them or prevailed upon them to accept Islam as well. So that is what is being probed right now, that is this only limited to religious conversion and radicalization, or was there also a conspiracy being hatched? Since there are some videos which suggest that armed training was being given, is there any linkages with trying to bring about a terror conspiracy? All that will have to be probed, but there are some similarities with the PFI modus operandi. Okay, Arunma and Shailendra, thanks a lot for getting us all those details. We'll keep tracking all the developments of this story.